ठीक है, ओके। माइक थोड़ा ज़्यादा सामने आ गया। राइट, थोड़ा नीचे ऐसे। हाँ। स्टार्ट। अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद। बिनामी खुदावंद जानो खैरत। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो है फ़ारसी ज़बान का असर मराठी ज़बान पर। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ारसी ज़बान सदियों से इस मुल्क की सरकारी ज़बान रही है और इस मुद्दत में उसने हिंदुस्तान की तहज़ीब व सक़ाफ़त और ज़बान व अदब पर गहरे असरात छोड़े हैं। फ़ारसी ज़बान ने न सिर्फ उर्दू ज़बान को मुतासिर किया है बल्कि हिंदुस्तान की दीगर इलाकाई ज़बानें भी फ़ारसी के असरात से मुस्तफ़ीद हुई हैं। उन्हीं में से एक रियासत महाराष्ट्र की ज़बान मराठी है। फ़ारसी 3.5 सदियों यानी 14वीं सदी के आगाज़ से 17वीं सदी ईस्वी के वस्त तक महाराष्ट्र की सरकारी ज़बान रही है और ये आम कायदा है कि हुक्मरानों की ज़बान का असर रियाया की ज़बान पर पड़ता है और मराठी भी इस कायदे से मुस्तस्ना नहीं है। 14वीं सदी के आगाज़ में देवगिरी के यादव हुकूमत के ख़ात्मे और दक्कन में मुस्लिम हुकूमत के क़याम के नतीजे में मराठी ज़बान ज़वाल पज़ीर हुई और उसकी जगह फ़ारसी ने ले ली और फिर अगले 350 सालों में उसने जो असरात मराठी ज़बान पर मुरतब किए हैं, हम इस पेशकश में आपके सामने उन असरात की एक झलक पेश करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान न सिर्फ अल्फाज की आमद हुई बल्कि कवायद के लिहाज से भी फ़ारसी ज़बान ने मराठी ज़बान को मुतासिर किया है, जैसा कि हम यहाँ पर कुछ मिसालें पेश करेंगे। जैसे मराठी ज़बान में हालत इजाफ़ी यानी पॉजेसिव केस जो वो फ़ारसी ग्रामर के मुताबिक हमने कई जगह देखा है। जैसे उसकी कुछ मिसालें हैं मौज़े हवेली, जिले पुणे, हवलदार इमारत। उसी तरह से मराठी अल्फाज की जमा बनाने के लिए फ़ारसी अलामात जैसे अलिफ नून व अलिफ ता का इस्तेमाल होता है। जैसे देशमुख से देशमुखान, देशपांडे से देशपांड्यान और सूबे से सूबेजात। ऐसे ही फ़ारसी सिफ़ात और सिफ़ाती लाहिकों का इस्तेमाल बतौर इसमें तब्दील, ये भी मराठी पर फ़ारसी का एक अहम असर है। जैसे साले मज़कूर, बसात, नेक, जूतर, मेहतर, कमतरीन। मराठी में फ़ारसी के असर का सबसे दिलचस्प मज़हर इस्म और फ़ेल के साथ मराठी मज़दर की तश्कील है। जैसे खर्चने, बदलने, आजमावने, फरमावने, नवाजने। इसी तरह मराठी ज़बान में बहुत से मुरक्कब अल्फाज दोनों ज़बानों के अज्जा से मिलकर बने हैं। जैसे फ़ारसी इस्म और मराठी फ़ेल से बने हुए अल्फाज कंबर बांधने, सल्ला देने, बाजू घेने, रद्द करने। उसी तरह से मराठी ज़बान में मुस्तामल बहुत से हुरूफ जार, हुरूफ अत और हुरूफ निदा व फरियाद वगैरह सीधे फ़ारसी से लिए गए हैं। जैसे हुरूफ जार की मिसालें आपके सामने हैं। दर, अज, बराए, तरफ़े, सिवाए, तहत। उसी तरह से मुरक्कब हरफ जार भी मुस्तामल हैं। जैसे दरमियान, अजराह, अजरुए, बाद अज। ऐसे ही हुरूफ रब्त की मिसालें हैं जैसे के, चुनांचे वगैरह। उसी तरह से हुरूफ निदा व फरियाद जैसे अफसोस, खूब, खूब, हाय, शाबाश फ़ारसी से लिए गए हैं। मराठी पर फ़ारसी के असरात का एक मज़हर फ़ारसी मुतल्लक़ात फ़ेल यानी एडवर्ब्स का इस्तेमाल भी है। जैसे बिल्कुल, जल्द, पैहम, नहायत। उसी तरह फ़ारसी के ये सिफ़ात कसरत से मराठी में इस्तेमाल होती हैं। जैसे अव्वल, दोम, सानी, खुर्द, बुदरूब। मराठी पर फ़ारसी के असरात का एक मज़हर वो अल्फाज हैं जो मराठी इसमों और फ़ारसी लाहिकों से बने हैं और जो इसमें फ़ाइल का माना देते हैं। जैसे चिटनीस, गोलंदाज, गांजे का सट्टेबाज वगैरह। कभी कभी दो हम माना अल्फाज का एक साथ इस्तेमाल होता है जिसमें से एक फ़ारसी और दूसरा मराठी होता है। जैसे चीज़ वस्त, मान मरातब, रीति रिवाज, कागज़ पत्र, बाजार हाट। एक और चीज़ जो मराठी पर फ़ारसी के असरात की निशानदेही करती है वो मराठी ज़रबुल अमसाल में फ़ारसी का गहरा इस्तेमाल है और ये मराठियों के दरमियान फ़ारसी की मकबूलियत की दलील भी है। ये चंद मिसालें देखें। हज़ीर तो वज़ीर, जुल्मा चा राम राम, चोरा ला मलीदा, चुकला फ़कीर, मशीदीत वगैरह। ख़ुलासा ये कि फ़ारसी ज़बान ने महाराष्ट्र और दक्कन के इलाके में अपने 350 साल के सफ़र में न सिर्फ अपनी तरक्की और फ़रोग़ का सुनहरी दौर देखा है
ने यहाँ की ज़बानों पर इतना गहरा असर छोड़ा है कि आज भी जबकि हिंदुस्तान में फ़ारसी ज़बान का बाज़ार सर्द हो चुका है, ये असर व नफूज़ उसी तरह कायम है और इस खित्ते के लोगों की बोलचाल का हिस्सा है, जिसे मिटाना आसान नहीं। इसी के साथ हम आज की अपनी इस गुफ्तगू का अख्तिताम करते हैं। बिस्यार तशक्कुर, खुदा हाफिज़। Good evening, friends. Myself, Dr. Zohaib Hassan, Head of the Department of History, Poona College of Arts, Science and Commerce. And today I will be speaking on the Second World War, which is the most destructive war ever to have occurred in history so far. As is the case with the World War, we all know that the war has its causes. Then there is a course in which battles and wars and all conflicts take place. And after that, we have the consequences. Okay, so one of the major causes for the outbreak of the
Second World War was the lopsided and biased and partial decisions made in the Treaty of Versailles of 1919, where Germany was solely held responsible for the First World War. It was made to pay a huge war indemnity, asked to thoroughly demilitarize itself. Its coal mines in Saar region were ceded to France for nearly 15 years, and all this naturally created and fostered anger in the hearts of Germans, who now started looking for a powerful leadership which came under Adolf Hitler. He was a ruthless, yet a completely dedicated man to his cause. He started the process of elimination of his political and ideological opponents and paving the way for his swift rise. He became Chancellor in 1933. Then, finally, when Germany attacked, the League of Nations, which can be considered some kind of precursor to the United Nations, was ineffective from the beginning. USA never became its member, although it was its brainchild, while Soviet Union, which now of course is Russia, was not allowed to join, thereby rendering it moribund. The aggression of fascist powers like Italy and Japan in Ethiopia and China was completely overlooked. The policy of appeasement whereby Britain and France completely overlooked Germany's audacious actions in Czechoslovakia. So this is also one of the major causes for the outbreak of the Second World War. Finally, when Germany attacked Poland on 1st September 1939, Britain and France realized that there's no end to Hitler's ambitions, and the two countries formally declared war on Germany on 2nd September 1939. Now, this is the course of the war. So, what are the important developments that took place during the war? The Axis powers, which is Germany, Italy, and Japan, began with overwhelming success. By 1940, Germany had occupied Belgium, Poland, Norway, Denmark, Netherlands, and even France. It attacked Britain in July 1940, indulged in extensive bombing, but the British were able to hold on, frustrating Hitler and forcing him to abandon his plans of invading the nation. By mid 1942, the Axis powers were at the height of their power, yet two of their doings led to their steep downfall. So, first was when Japan attacked US naval base in Hawaii, Pearl Harbor. There's a famous movie also made on the same. The United States, which so far had not entered the war, now joined the war on the side of the Allies. And moreover, Germany, which initially had made gains in the USSR, now was on the retreat after Russians resorted to scorched earth policy and putting up a stubborn resistance. So what is now happening is that the USA and USSR, when they entered the war, that tide turned in favor of the Allies. So the coming of the USA and USSR on the Allied side decisively changed the course of war, and by mid-1944, Germany was facing serious reversals, and with the dropping of atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945, Japan surrendered and the war was over. So now, what are the consequences? Yet, it was the most costly and destructive war in history, as I told you in the beginning. There were over 70 million fatalities, and the cost came to about a staggering 1 trillion at that time, 1 trillion US dollars. Other important consequences of the war were the emergence of USA and USSR as the new superpowers, the displacement of old colonial powers such as Britain, France, and Germany, strengthening anti-imperialist freedom movements in these countries' former colonies, which of course Africa and Asia. We all know that in India, the freedom movement got a spurt after the end of the Second World War. India became independent in 1947. Another important development was the setting up of the United Nations Organization, UNO, which was again formed in 1945 to prevent such type of conflicts in future and work towards peace and sustainable development. Yet sadly, still, this has not been achieved successfully. Thank you.
इसका किधर है, इनर्ज नहीं होगा मतलब पीपीटी ये नहीं हो रहा है सर, ये पीपीटी ये नहीं हो रहा, फुल कर दी के फुल इसमें नहीं हो रहा है, किया मैंने छोटा स्लाइड शो का ऑप्शन ही इधर नहीं आ रहा है, स्लाइड शो किया मैंने, हम्म ये स्लाइड शो पर किधर है इसको, स्लाइड शो पे करना वहाँ पे आया हूँ, yes. Good afternoon students. Suppose my hand is lost in accident, so can it replace or reform again? Never. Means the original hand will not reform again, but when we trim our nail and here again they reform or regrow. But in some cases, in some animals, when we see the salamander, regeneration phenomena. In the regeneration, the lost body part and the tissue, any tissue or damaged tissue again reform. So, for example, if the tail of the house lizard is cut, the missing part develops again from the remaining part of the tail. Some animals have a great power of regeneration and some animal it is very poor, like human being. For example, Hydra, Planaria. In this, the small part of the or the small fragment of the body which going to form a complete new Hydra or the new Planaria. Our body also spontaneously loses cells from the surface of the skin and replaced by newly formed cells. This is due to regeneration. So today we are going to discuss in detail about the regeneration in animals. First of all, we see what is regeneration. The regeneration is a natural potential of living organisms to replace, renew or repair worn out, damaged or lost parts of the body, or to reconstitute the whole body from a small fragment during the post-embryonic life of an organism. Now see the feature of regeneration process. This process is varies in different animals. It is greater in lower animal and the earlier developmental stages of organism. It is very poor in mammals, restricted with nails and hairs externally, but internal regeneration found in specific organ or tissue. It is more prevalent in the plant cells. See, these are some examples of invertebrate animals in which regeneration occurs, like sponges, Hydra, Planaria, earthworm, crab,
mollusk, and the echinodermata like sea star. These are few examples of vertebrate animals having a regeneration power such as fins and tails in fish, limbs and tail in amphibians and reptiles. In the birds, regeneration is restricted at the beak. In the case of mammals, regeneration is restricted to tissue only. External parts are not regenerated. Skin and skeletal tissue possess great power of regeneration. The liver has the maximum capacity of regeneration. If the kidney is damaged or removed, the other enlarges to compensate the lost kidney. This is called as a compensatory hypertrophy. Now see the types of regeneration in animals. Broadly, it is studied under three heads: physiological, reparative, and the autotomical regeneration. First of all, see about the physiological regeneration. In this type of regeneration, a constant loss of many kinds of cells due to wear and tear caused by day-to-day activities. The replacement of these cells is known as physiological regeneration. For example, replacement of RBCs. The worn-out RBCs are deposited in the spleen and new RBCs regularly produced from the bone marrow cells, since the lifespan of RBC is only 120 days. Another example we can take as a replacement of epidermal cells of the skin. You can see in the picture, the cells from the outer layer of epidermis are regularly peeled off by wear and tear. These are constantly being replaced by new cells added by the Malpighian layer of skin. The next type of regeneration is reparative regeneration. In this type, the replacement of lost part or repair of damaged body organs. In this type, regeneration wound is repaired or closed by the expansion of the adjoining epidermis over the wound. For example, regeneration of limbs in salamanders, regeneration of lost tail in lizards, healing of wound, replacement of damaged cells. And the third type is autotomy. In some animals, like starfish, some part of the body is broken off on being threatened by a predator. This phenomenon of self-mutilation of the body is called as autotomy. For example, crabs break off their leg on approaching of the enemy. Holothurians, means sea cucumbers, throw off their internal viscera in defense mechanism, and the break of an arm in the starfish. The regeneration also having a different types on the basis of cellular mechanism. Based on cellular mechanism, regeneration can be 5 types: morphallaxis, epimorphosis, heteromorphosis, super regeneration, and Wolffian regeneration. Now see morphallaxis. In this type of regeneration, the parts of the new growth of the particular body part, it is due to the remodeling of existing tissue and the reestablishment of the boundaries of that tissue. Thus, in this case, the involving very little new growth. As a result, the regenerated individuals is much smaller initially, in subsequently increase their size and becomes normal after feeding. This type of regeneration is known as morphallaxis. The example, regeneration of hydra from a small fragment of its body. The next type is epimorphosis. In this type of regeneration, de-differentiation is of adult structure in order to form an undifferentiated tissue. Actually, de-differentiation is one of the property of the cell during the development of the organism. Means differentiated cell, diversified cells again comes into their original form or the embryonic form as a stem cell. That is the de-differentiation. So in this case, regeneration, de-differentiation of the adult structure in order to form undifferentiated mass of cell, and they are highly proliferating and accumulate under the epidermis, which has already expanded with 2 days. Bulge transform into conical lump and is called as a regeneration bud. And from that regeneration bud, the cells continue proliferate and finally redifferentiate to form an rudiment of a limb, and the rudiment eventually transform into a normal limb. This type of regeneration is the epimorphosis. For example, limb regeneration in amphibian animals.
The third type is a heteromorphosis or a heteromorphic regeneration. In this process of different organ develops from the one that has been removed. The phenomenon is called as a heteromorphosis. For example, in shrimps, Palinurus, it is a lobster, spiny lobster. In this animal, if eye is removed from eye stalk, the new eye is regenerated. But if the eye is removed along with the optical ganglion, instead of the eye, an antenna-like organ is regenerated. This type of regeneration is exhibited by lower animals. So you can see in the picture that. The fourth type is super regeneration. In this type of development of superfluous number of organs or parts of the body, heads, tail, limbs, as a result of regeneration is known as a super regeneration. Means when we take a deep cut is made on the deep cut on the head or end of the end of the planaria body or the earthworm. So additional head will be developed in planaria and additional segments also develop in the case of earthworm. Cuts in the middle part cause the development of both heads and tail. The fifth type of regeneration is a Wolffian regeneration. It is a special type of regeneration found in the urodales and anurans. These are the amphibians. In the trichurus, if the lens of the eye is removed, a new lens is formed from the uninjured iris. The original lens is developed from the epidermal ectoderm, but the regenerating lens formed from the iris is neuroectodermal in origin. Thus, regeneration of the part of an organ from a tissue other than its original embryonic tissue is called as a Wolffian regeneration. The name is given after the discovery by the Wolff in 1935. So students, today we studied about the important developmental concept, that is a regeneration in animal with its different types in detail. Thank you.
ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं, शुक्रिया। ठीक है सर, ठीक है। कौन सी है? पीपीटी इसमें ठीक है। ठीक ठीक, वैसा कुछ नहीं है सर। एक मिनट, ठीक है सर। नाजरीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर अबरार अहमद, उस्ताद उर्दू, शोबे उर्दू अरबी फ़ारसी, पूना कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। आज के इस लेक्चर में मैं जिस मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो है मुख्तसर अफसाना, तारीफ़ और अज्ज़ाए तरकीबी, जिसे अंग्रेज़ी में शॉर्ट स्टोरी डिफिनेशन एंड एलिमेंट्स। हमने इससे पहले कि जितने लोग हैं ये बताना ज़रूरी है कि ये जो सिन्फ़ है उर्दू की, उस सिन्फ़ को किसमें, ये किस उर्दू नस्र की किस कैटेगरी में आती है, उससे जान लेना बहुत ज़रूरी है कि पूरी उर्दू नस्र को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर एक जिसे हम कहते हैं जो अफसानवी अदब, दूसरा गैर अफसानवी अदब। अंग्रेज़ी में इसे हम फ़िक्शन राइटिंग एंड नॉन फिक्शन राइटिंग कहते हैं। तो आज जिस सिन्फ़ में हम बात कर रहे हैं वो अफसानवी अदब की एक सिन्फ़ है जिसे हम अफसाना कहते हैं। अफसानवी अदब की में कुल 5 सिन्फ़ें हैं, जैसे दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा और अफसानचा। और इन पांचों में से एक सिन्फ़ है अफसाना। तो आज हम बात करेंगे कि अफसाना क्या है और ये अपनी तमाम असनाफ से किस तरह से मुख्तलिफ है और किन बुनियादों पे हम इसे अफसाना कहते हैं। तो अफसाना वो जदीद नस्री सिन्फ़ है जिसमें किसी एक वाक़या, किसी एक हादसा, किसी एक जज्बा, ज़िंदगी के किसी एक पहलू को पेश किया जाए। इसमें वहदत तासुर हो, ईजाद व इख्तिसार हो, तख़य्युल की आमेज़िश हो, अफसाना निगार का एक नुक्ते नज़र भी हो। इसको हम एक मिसाल से भी समझ सकते हैं कि अगर नावल को एक सेब तस्वुर कर लिया जाए तो उसकी एक काश यानी उसका एक टुकड़ा जो है वो अफसाना कहलाता है। यानी अगर किसी कहानी में किसी इंसान की ज़िंदगी के तमाम नशेब फ़रात को पेश किया जाए तो वो नावल कहलाएगा, यानी वो पूरा सेब है। लेकिन अगर उस इंसान के किसी एक पहलू को मंजर-ए-आम पे लाया जाए तो वो अफसाना कहलाएगा, गोया उस सेब की एक काश। इसकी तारीफ़ मुख्तलिफ दानिश्वरों ने और अदब के माहिरीन ने अपने मखसूस अंदाज में पेश की है। क्योंकि ये सिन्फ़ जो है मगरिब से आई है, इसलिए मगरबी मुफ़क्किरीन और उर्दू के फ़नकारों ने जिस तरह से इसकी तारीफ़ की है उसकी कुछ लोगों की मिसालें मैं आपके सामने पेश करूँगा। एडगर एलन पो के मुताबिक मुख्तसर अफसाना एक ऐसी बयानिया नसरी सिन्फ़ है
जिसमें जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सके। एक नशिस्त से उसकी मुराद ये है कि जो आधे घंटे से लेकर के 1 या 2 घंटे के अंदर पढ़ी जा सके, जो मुतासिरकुन अंदाज में लिखी हो और जिसमें वहदत तासुर और जामियत हो। मोप्सा के मुताबिक एक ऐसी कहानी जिसे हम आधे घंटे से लेकर 2 घंटों के अंदर पेश कर सकें। सैयद वकार अदीम ने अफसाने की तारीफ यूँ बयान की है कि मुख्तसर अफसाना एक ऐसी मुख्तसर कहानी को कहते हैं जिसमें एक ख़ास किरदार, एक ख़ास वाक़या, एक तजर्बा या किसी ख़ास तासुर की वजाहत की गई हो, नेज़ इसके प्लाट की तफसील इस कदर मुनज़्ज़म हो कि उसे तासुर के साथ पेश किया जा सके और ख़ूबसूरती से पेश किया जाए। डॉक्टर अबुल्लाह सिद्दीकी के मुताबिक मुख्तसर अफसाना से मुराद नस्र में एक मुख्तसर सादा किस्सा है जिसमें ज़िंदगी के किसी एक पहलू को बेनकाब किया गया हो। मज़कूरा बाला तारीफ़ात की रोशनी में अगर हम ये देखें तो मुख्तसर अफसाने की जो तारीफ़ होती है वो ये है कि ज़िंदगी के किसी एक पहलू, एक वाक़या, एक जज्बा, एक एहसास, एक ख़याल, एक तासुर, एक ज़हनी कैफियत को ईजाद व इख्तिसार के साथ कहानी की शक्ल में इस खल्लाकाना और फ़नी तरीके से बयान करना कि उसमें इत्तेहाद तासुर पैदा हो जाए जो पढ़ने वाले के जज्बात व एहसासात पर असर अंदाज हो, अफसाना कहलाता है। अफसाने के जो अज्जाए तरकीबी हैं वो आपके सामने हैं। मौजू यानी थीम, प्लॉट, किरदार, मुकालमा और आपके उसलूब, फ़ज़ा, माहौल और तकनीक, ये 8 उसके अज्जाए तरकीबी हैं और वहदत तासुर 9। इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि किसी भी कहानी को या किसी अफसाने को लिखने के लिए इन 9 जो अज्जा हैं उसको ध्यान में रखना होता है। अगर हम इनको ध्यान में नहीं रखते हैं तो वो एक अच्छा अफसाना या अच्छी कहानी नहीं हो सकती है। सबसे पहला जो इसका जुज़ है वो मौजू है, यानी जिसे अफसाना निगार उजागर करने के लिए किसी एक नुक्ते पर अपनी निगाह को मरकूज़ करता है। ये एक मुश्किल मरहला है, इसके लिए अमीक मुशाहिदा, वसी मुताले की ज़रूरत होती है, तभी अफसाना निगार जो है मौजू पर उबूर रखते हुए कहानी के ताने बाने को बुन सकता है, प्लाट को बाकायदगी से तरतीब दे सकता है और उसके वसीले से एक अच्छा उन्वान कायम कर सकता है। नंबर 2 उसका प्लॉट है। ये प्लॉट जो है अफसाने का एक सबसे अहम जुज़ है। ये अफसाने की रीढ़ की हड्डी के मानिंद होता है। पूरी कहानी इसी पे मुनहसिर होती है। अगर प्लॉट मरबूत और मुनज़्ज़म ना हो तो कोई भी कहानी आगे नहीं बढ़ सकती है या अच्छी नहीं हो सकती है। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट दरअसल किसी कहानी के वाक़यात को एक दूसरे से मरबूत करके मुनज़्ज़म तरीके से पेश करने को कहते हैं। और इसको एक मिसाल से समझा जा सकता है कि कहानी और प्लॉट में फ़र्क क्या है। E.M. फास्टर ने कहानी और प्लॉट के फ़र्क को वाज़े करते हुए लिखा है कि मिसाल के तौर पर कि एक राजा था, एक रानी थी, पहले राजा का इंतकाल हुआ, बाद में रानी का इंतकाल हुआ। ये एक कहानी है। लेकिन अगर इसी बात को हम यूँ पेश करें कि और इसको एक मंतकी रब्त के ज़रिए से जोड़ दें तो ये प्लॉट हो जाएगा। यानी एक राजा था, उसकी एक रानी थी, राजा का इंतकाल हुआ और राजा के इंतकाल के सदमे से रानी का इंतकाल हो गया। ये एक प्लॉट है, यानी एक वाक़यात दूसरे वाक़यात से बिल्कुल मरबूत हैं और इस एक कहानी से हम कई प्लॉट तैयार कर सकते हैं। प्लॉट की भी कई किस्में हैं, सादा प्लॉट, पेचीदा प्लॉट, गैर मुनज़्ज़म प्लॉट, मुनज़्ज़म प्लॉट, ये प्लॉट की किस्में हैं। नंबर 2 किरदार, कैरेक्टर जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। किसी कहानी को लिखने के लिए ये भी बहुत अहम होता है और ज़रूरी भी है। अगर किरदार ही कहानी में नहीं होंगे तो फिर जो कहानीकार है या अफसाना निगार है वो अपनी बात को क़ारीन तक या पढ़ने वाले तक पहुंचा नहीं सकता है। यानी अशख़ास किस्सा के ज़रिए ही हम अपनी कहानी को पेश करते हैं। किरदार अफसाने का मजबूत तरीन जुज़ है। नाक़िदीन फ़न ने इसे अफसाने में सबसे ज़्यादा अहमियत दी है। बगैर किरदार के अफसाने की तश्कील मुश्किल है। जिन अफसानों में नबातात या हैवानात हीरो की शक्ल में होते हैं उनमें भी उनको इंसानों की तरह बोलते, सोचते, समझते और अमल करते दिखाया जाता है। किरदार की 2 किस्में हैं, एक रुखे जामिद यानी फ्लैट किरदार, पहलूदार यानी फ़ाआल मुतहर्रिक किरदार। नंबर 3 उसका जो अहम जुज़ है वो मुकालमा है यानी डायलॉग। किसी भी कहानी में अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए, उसको करने के लिए डायलॉग की ज़रूरत होती है। बगैर डायलॉग के हम अपनी बात को
आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। किरदार को नुमाया करने, उभारने में मुकालमे बेहद अहमियत रखते हैं, क्योंकि मुकालमों के ज़रिए से ही इंसान की सीरत और शख्सियत सामने आती है, और किरदारों के हुस्न कुब का अंदाज़ा उसके अमल के साथ साथ उसके मुकालमे से होता है। मुकालमे के बाद जो उसका एक अहम जुज़ है वो उसलूब यानी स्टाइल है। उसलूब दरअसल किसी अदीब का वो मुनफरिद लबो लहजा या मखसूस जो फ़नकाराना तरीका है, जिसकी मदद से वो अपने ख़यालात और एहसासात को कारी तक पहुँचाने की कोशिश करता है, और साथ ही वो अपनी नुदत अदा और तर्ज सुखन से कारी को महजूज़ करता है। अगर इस तर्ज अदा में इनफरादियत को वाज़े करता है। मैं इसको मिसालों के ज़रिए से वाज़े करता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर आपको अदबी ज़ौक़ है और आप किसी शायर या अदीब के कलाम को पढ़ते हैं, तो आप फ़ौरन ये बता देते हैं कि ये शेर या ये तहरीर फ़लाँ शख्स की है। वो ये आप इस वजह से कहते हैं कि आप उसके उसलूब को जानते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल का शेर है कि नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा, नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेदार हो जाएं। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इन अशार को पढ़ने के बाद आपकी ज़ुबान से फ़ौरन ये निकलता है कि ये अल्लामा इकबाल के अशार हैं। लेकिन जब मैं ये शेर पढ़ता हूँ कि नक्श फरियादी है किसकी शोखिए तहरीर का, नक्श फरियादी है किसकी शोखिए तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, या ये शेर की हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो आप कहते हैं कि ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। तो इन दोनों अशार में जो फ़र्क है वो उनके उसलूब का, अंदाज़े बयान का है। इसी तरह से नसरी तहरीरों में भी होता है। जब आप मीर अम्मन की तहरीर पढ़ते हैं, जब आप प्रेमचंद को पढ़ते हैं, जब आप मंटू को पढ़ते हैं, जब आप राजेंद्र सिंह बेदी की तहरीरों को पढ़ते हैं, तो ये वाज़े फ़र्क आप महसूस करते हैं और आप ये कहते हैं कि ये जो अंदाज़े बयान है वो मंटू का है या इस्मत का है। तो इसी तरीके से उसलूब जो है किसी अदीब या शायर की पहचान होता है। उसकी भी कई किस्में हैं, बयानिया उसलूब, कुरानी उसलूब, दास्तानी उसलूब, मुरासलाती उसलूब, सवानी उसलूब, अलामती उसलूब, हिकायती उसलूब, ये सारी चीज़ें हैं। और वक्त की किल्लत के बाइस मैं अपना ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और बाकी जो उसके जुज़ हैं इंशाअल्लाह उस पर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। शुक्रिया। थोड़ा बड़ा करना, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, बस ठीक है, दिख रहा है। कर दिया।
ऑडियो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा सर? मैंने क्या है यहाँ पे? हाँ, तो ये जो है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। एक मिनट। झुकना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, ठीक है। यस, या ठीक है सर। अभी बड़ा हो रहा शायद ये। Yes. Hello friends, myself Dr. Shoaib Ahmed, Department of Zoology, Poona College of Arts, Science and Commerce. Today we are going to explore structure of neuron. Actually, neurons are fundamental building blocks of the nervous system that is responsible for transmitting and processing informations. Neuron is made up of two main parts: anterior cellular, that is called soma or cell body, and posterior elongated axon. Soma contains the nucleus, which houses the genetic material, that is DNA, of the cell. There are numerous branching extensions extending from the cell body, that is called as dendrites. Dendrites receive incoming signals and transmit them towards the cell body. Dendrites play a crucial role in gathering informations from other neurons. Axon is a long, slender projection extending from the cell body. It carries electrical impulses away from the cell body towards other neurons or target organs. Axon is covered by myelin sheath. Axon is covered with myelin sheath that insulate axon. Myelin sheath speed up the transmission of nerve impulses along the axon. Myelin is produced by specialized glial cells known as oligodendrite and oligodendrocytes in the central nervous system, while in peripheral nervous system it is lined by the Schwann cells. At the end of axon, there are small branches called as axon terminals. Axon terminals contain synaptic vesicles filled with neurotransmitters. When an action potential reaches the axon terminal, neurotransmitters are released into synapse to communicate with the other neurons. There is a small gap or junction between the axon terminal of one neuron and the dendrites of a cell body of another neuron, which is called synapse. Neurons communicate with each other at synapse through the release and reception of neurotransmitters. This communication allows information to be transmitted from one neuron to another. So, in conclusion, we can say neurons are complex cells which are with specialized structures that enable them to transmit and process information in the nervous system. Thank you.
एक्टिविटी आपकी चालू है। पेन ड्राइव से लगाओ यार उसको डेस्कटॉप पेन ड्राइव से डायरेक्ट चालू करो। हाँ क्या लाइए? मुस्कुराहट लाइए। आप पूना कॉलेज में हैं। हाँ थोड़ा नीचे लो। घूम रहा है सब। एसी बंद बंद है क्या यार? वो एसी चालू कर। अरे इसका बहुत गर्म हो रहा, पसीना छूट जाएगा मेरे को। सही पसीना छूटेगा। फैन चालू करना होगा। फैन चालू कर सकते हैं ना? पसीना छूट जाएगा मेरे को। बस 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 और नीचे। ये क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है और नीचे आवाज आएगा क्या? यहाँ पर ऐसे तो मुझे स्लाइड चेंज होगी तो यहाँ या वहाँ देखना है? लेकिन स्लाइड भी तो चेंज करनी है। अच्छा ठीक है समझ गया मैं। तीन बार करूँगा मैं सिर्फ। बस ठीक। स्टार्ट। पसीना छूटने वाला है मेरे को। रेडी? Hi everyone. Today we are going to discuss very important part of the Indian Constitution, that is fundamental rights.
prior to taking off this flight, let's understand what are the fundamental rights. Fundamental rights are essential human rights that are offered to every citizen, irrespective of caste, race, creed, and place of birth. These are equal to freedoms, and these rights are essential for personal good and the society at large. A constitution is not only about the composition of the various organs of government and the relations among them. The constitution is a document that sets limits on the powers of the government and ensures a democratic system in which all persons enjoy certain rights. Today, we shall study fundamental rights contained in the Indian Constitution. Part 3 of the Constitution of India lists the 6 fundamental rights and also mentions the limits on these rights. Fundamental rights are a set of basic rights and freedoms that are enshrined in the constitution of many countries, including India. In the Indian Constitution, the fundamental rights are specifically outlined in Part 3 from Article 12 to 35. These rights are considered fundamental because they are essential for the well-being, dignity, and protection of individuals, and are often seen as the foundation of a just and democratic society. Fundamental rights are the claims of the people. Constitution of the country ensures the entitlement of the fundamental rights. Violation of these rights can be challenged through legal means, and independent judiciaries in many democratic countries play a vital role in upholding and interpreting these rights. During our freedom struggle, the leaders of the freedom movement had realized the importance of rights and demanded that the British ruler should respect rights of the people. The Motilal Nehru Committee had demanded a Bill of Rights as far back as in 1928. It was therefore natural that when India became independent and the constitution was being prepared, there were no two opinions on the inclusion and protection of rights in the constitution. The constitution listed the rights that would be specifically protected and called them fundamental rights. The fundamental rights are enshrined in Part 3 of the Constitution from Article 12 to 35. The framers of the Constitution derived inspiration from the Constitution of USA, that is Bill of Rights. Fundamental rights are considered as a Magna Carta of India. Magna Carta is the charter of rights issued by the King John of England in 1215 under pressure from the barons. This is the first written document relating to the fundamental rights of the citizens. Friends, to get through knowledge of the 6 fundamental rights incorporated in Indian Constitution, we must know the features of the fundamental rights. First significant feature of fundamental rights is it contains a very long and comprehensive list of justiciable fundamental rights. Yes, fundamental rights are justiciable, which means that individuals have the legal right to enforce and seek remedies for the violations of these rights through the judicial system. In many democratic countries, the constitution of legal framework explicitly provides mechanisms for citizens to approach the courts when their fundamental rights are infringed upon by the government or any other entity. In Indian Constitution, Article 32 provides an opportunity to every person to approach to the Supreme Court to seek justice against the violation of their fundamental rights, wherein Article 226 empowers the High Court to investigate the fundamental rights violations. Second, the fundamental rights are guaranteed by the Constitution to all the persons without any discrimination. They uphold the equality of all individuals, the dignity of the individual, and larger public interest and unity of the nation. Third, the fundamental rights are meant for the idea of political democracy. They prevent the establishment of an authoritarian and despotic rule in the country and protect the liberties and freedoms of the people against the invasion by the state. They operate as limitations on the tyranny of the executive and arbitrary laws of the legislature. In short, they aim at establishing a government of laws and not of men. They are not absolute but qualified. The state can impose reasonable restrictions on them. However, whether such restrictions are reasonable or not is to be decided by the courts. Thus, they strike a balance between the rights of the individual and those of the society as a whole, between individual liberty and social control. Fundamental rights are named
So because they are guaranteed and protected by the constitution, which is the fundamental law of the land, they are fundamental also in the sense that they are most essential for the all-round development of the individuals. Some of them are very available only to the citizens, while others are available to all persons, whether citizens, foreigner, or legal persons like corporations and companies. They are not sacrosanct or permanent. The parliament can curtail or repeal them, but only by a constitutional amendment act and not by an ordinary act. Moreover, this can be done without affecting the basic structure of the constitution. They can be suspended during the operation of a national emergency, except the rights guaranteed by the Articles 20 and 21. Further, the 6 rights guaranteed by Article 19 can be suspended only when emergency is declared on the grounds of war or external aggression and not on the ground of armed rebellion. Their application to the members of armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies, and analog services can be restricted or abrogated by the parliament. Their application can be restricted while martial law is in force in any area. Martial law means military rule imposed under abnormal circumstances to restore order. So these are the important features of the fundamental rights incorporated in the Indian Constitution. Thank you so much. थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा मेरे में हाइट ज़्यादा है फाइट भी ज़्यादा है सर उसको थोड़ा सा हाँ फॉन्ट बढ़ाना पड़ेगा हाँ बस बस हो गया हाँ नहीं थोड़ा बड़ा करो बस लेकिन थोड़ा सा उसका ये स्पेसिंग हाँ बस बस फॉन्ट से बस हो गया हाँ यस यस अभी नहीं सर अभी नहीं सेव करो सेव करो सेव करो पूछ रहा हूँ तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है अरे बोलो तो सही पहले कितने लोग हैं हाथ उठाओ अब्दुल सर हाँ ना क्या सोच रहे हैं कुमार सर सेटअप थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अगर आप सिर्फ पीपीटी है स्क्रिप्ट किसकी है स्क्रिप्ट किसका है पीपीटी की स्क्रिप्ट है वैसा थोड़ी चलता है ना ऐसा करने का रहता तो पीपीटी विद स्क्रिप्ट कोई नहीं ना
काय करायचं? 2 मिनिटं मी इथून हे ऑप्शन बंद करतो. जोडा. हा बरोबर. ठीक. आपकी पीपीटी है ना? चलो मैडम. कंसेप्ट ऑफ कौन सा है आपके पीपीटी? एसएम पीडीएफ प्रेजेंटेशन. ग्रुपवर टाकलंय मी तीच हेनरी घेतली. फ्युअल. पीडीएफ है मैडम ये. नाही, PPT आहे. पीडीएफ है. PPT चं PDF. तुम्हाला काय करावं लागेल? असं 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 बोटाने वर वर सरकावं लागेल. चालेल चालेल. काही problem पण आता स्क्रिप्ट हा दिसेल. येस अशा पद्धतीने काय पुढे पुढे सरकव. 2च मिनिटाचं आहे माझं जास्त. लगा दिए सर. सर हो गया क्या? मेरा पहले कर लूँ. हाँ नहीं हो गया. ये इस नेक्स्ट नाही हाताने करू. एक वाढव. स्टार्ट. दीपिका नाही नाही मिसेस दीपिका DEEPIK. किनिंगे KINING. हा बरोबर. येस येस. येस. नाही स्टार्ट इथून स्टार्ट करेल. हां. हॅलो एव्हरीवन. डिअर स्टुडंट्स. Hello everyone. Dear students, we are going to start to contribution of Henry Fayol, the father of management. Henry Fayol, he born in Istanbul, 29 July 1841, Paris. He's a French mining engineer and director of mines who developed a general theory of business administration
that is often called Fayalism. He and his colleague developed this theory independently of scientific management, but roughly contemporarily. Like this, F.W. Taylor, he is also widely known as a founder of modern management method. Fayol was born in 1984. He contributed to the management. His Fayolism is known as a functions of management. Fayol's work was one of the first comprehensive statement of general theory of management. He proposed that there were 5 primary functions of management and 14 principles of management. Functions of management: to planning, to organize, to staffing, to command or direct, to coordinate, and to control. Dear students, now we are going to see the 14 principles of management. The first principle, division of work. Work should be divided among individual and groups to ensure that efforts and attentions are focused on special portions of the task. Fayol presented work specialization as the best way to use the human resource of the organization. Second principle of management, authority. The concept of authority and responsibility are closely related. Authority was defined by Fayol as the right to give order and the power to exact obedience. Responsibility involves being accountable and is therefore naturally associated with authority. Whoever assumes authority also assumes responsibility. Discipline. It is the third principle of management. A successful organization requires the common effort of workers. Penalties should be applied judiciously to encourage this common effort. Unity of command. This is the next principle of management. Workers should receive order from only one manager. Unity of direction. The entire organization should be moving toward a common objective in a common direction. Subordination of individual interest to the general interest. It is the next principle of management. The interest of one person should not take priority over the interest of the organization as a whole. Remuneration. Many variables such as the cost of living, supply of qualified personnel, general business condition, and success of the business should be considered in determining our rate of pay. So remuneration is the uh, best principle of management. Centralization. Fayol defined centralization as a lowering the importance of the subordinate role. Decentralization is increasing the importance. The degree to which centralization or decentralization should be adopted depend on the specific organization in which the manager is working. Next, scalar chain. Manager in a hierarchy are a part of chain like authority scale. Each manager from the first line supervisor to the president possess certain amount of authority. The president possesses the most authority, the first line supervisor the least, and lower level manager should always keep upper level manager informed of their worker activity. The existence of scalar chain and adherence to it are necessary if the organization to be successful. Next, order. For the sake of efficiency and coordination, all materials and people related to specific kind of work should be treated as equally as possible. Equity. All employees should be treated as equally as possible. Stability of tenure of personnel. Retaining productive employees should always be a high priority of management. Recruitment and selection costs as well as increased product reject rates are usually associated with hiring new workers. Initiative. Management should take steps to encourage worker initiative, which is defined as a new or additional work activity undertaken through self-direction. Spirit the corps. This is the last principle of management. Management should encourage harmony and general good feeling among employees. Thank you to one and all. कलेक्शन मध्ये जाऊन नको पाठवायचं आणि आहे त्याला सेव्ह करू. हा सीन कलेक्शन मध्ये सेव्ह कर.
PPT का escape करा पहले लगा दो इधर से सीन कलेक्शन सेम असतो तुम्ही नवीन सीन कलेक्शन मध्ये ना आता आपण म्हणताय LCS नावाने हा सेम नवीन जेव्हा घेऊ आपण त्यावेळेस नवीन नाव द्यायचं तो नवीन नावाने काय आहे VFX खाली कीबोर्ड त्या नावाने करून हे आता सीन कलेक्शन मध्ये जायचं काम सुरू करण्यापूर्वी मी म्हणायचं नवीन नाव द्यायचं त्याला हां सेफ सर स्टँडिंग पोझिशन बरोबर हां शेख SHAIKH yes okay. Hello dear students, today we are going to see a topic from chapter number 1, that is Kingdom Protista, and today we'll see a last bit from this topic, that is reproduction in paramecium. So far what we have seen is, as we know that paramecium is a unicellular ciliated protozoan. So I think reproduction, like we might be interested like how this single celled organism reproduce. As we all aware of that about the reproduction, which is one of the quality of a living organism. So reproduction in a simple layman's language is nothing but the production of a offspring. If we look at in case of paramecium, this reproduction takes place by two ways. One is asexual method and another is sexual method. Paramecium reproduces asexually by binary fission and sexually by conjugation. So we'll move on to the details. Binary fission. As the name itself suggests that binary fission, meaning a single cell organism is broken down into two. That is what we call it as a binary fission. In case of paramecium, if you look at transverse binary fission is taking place. What do you mean by transverse binary fission? Transverse binary fission is basically division of an unicellular organism which is taking place at the right angle to the longitudinal axis of the body. And this type of binary fission is called as transverse binary fission. In case of ciliates, another kind of binary fission is also observed, and we call it as a longitudinal kind of binary fission, which is observed in case of euglena. So we restrict our discussion only to the paramecium, where the binary fission is taking place in a transverse manner. So let's move on to the how binary fission actually takes place in case of paramecium. So whenever paramecium undergoes binary fission, first it stops feeding and its oral groove starts disappearing. It's quite logical. If organism is stop feeding, then there is no need of a oral groove, which is basically a feeding apparatus. So first of all, the first event what occur is the oral groove disappears. Secondly,
macronucleus, which is the larger nucleus present in case of ciliate, it divides by a mitosis, and micronucleus, it divides by mitosis. So remember, there are two types of nuclei, and these two nuclei, they divide in a two different ways. One is amitosis, second is mitosis. We know that in case of mitosis, there is a equational division and the equal division is taking place. Whereas in case of amitosis, division is not equal. So that is what these two nuclei basically divide in case of binary fission, amitotically and mitotically respectively. After the division, these two nuclei, they move towards the opposite pole, and the same thing you can observe in diagram also. The nuclear division is taking place, and these two nuclei, they are moving towards the opposite end. At the same time, when this nuclear division is going on, the constriction is develops at the middle part of the body, and this constriction divides the cytoplasm into two equal parts, and this event of division of cytoplasm is called as cytokinesis. So in this way, two daughter paramecia are produced. So daughter from the anterior end is called as proter, while the another daughter which is from the posterior end is called opist. I think in earlier lecture you might be aware of that. In case of paramecium, the rounded end is called as the anterior end and the conical end is called as the posterior end. So when transverse binary fission is taking place and organism is getting divided into two, the anterior individual is called as proter and the posterior individual is called as opist. So both the proter and opist are of equal size, and they contain a complete set of cell organelle as they are in the parents. So oral groove, once the division is completed and from the one parent, when two daughters are produced, oral groove and cytopharynx, which are newly formed in both the daughter. Now it is also very logical that now whatever the daughter has been produced, they needs to grow, and for growing purpose they needs to feed. So for feeding purpose, they must have a feeding apparatus, and this feeding apparatus is present in the form of a oral groove and cytopharynx. So that is why in the daughter cell or in the daughter individual which are produced after the binary fission, they starts developing new oral groove and cytopharynx. One contractile vacuole they receives from their parent. So one goes to the proter and another goes to the opist, and other two are newly formed because in each individual they have received one contractile vacuole from their parent, and another one is newly synthesized in both the parents. If you look at overall, like for this entire process, it took place in 2 hours, and in a day it takes place almost 1 to 4 times. The most important thing about the binary fission is that it is a kind of asexual reproduction because there is no involvement of gamete, and simply the parent body is getting divided into two. And this kind of asexual mode of reproduction only occurs when the favorable conditions are there. Favorable condition basically includes plenty of food, favorable temperature, all the environmental conditions suitable for the organism. Only in such favorable condition or only such conducive conditions the binary fission takes place. After repeated binary fission, what happens? Paramecium lost its vigor. Due to repeated binary fission, now the paramecium unable to perform or unable to discharge its physiological activity more vigorously. So after multiple rounds of binary fission, paramecium performs conjugation, which is a sexual kind of and this conjugation really helps rejuvenate lost vigor and to discharge the physiological activity more vigorously. So this conjugation will continue in the next lecture. Thank you so much.
जमीन तुम्हाला करा त्याचं स्क्रोल करायचं असं केलं तर फक्त ग्रीन स्क्रीन तर हां फक्त ग्रीन केसांच्या मागून टाकू का? ठीक आहे. हो. हे दिसतंय का नीट पण? फुगा वगैरे नाही ना केसात? अटकल्यासारखंच वाटतंय मला पण करता वर आलं. वाटतंय हे मागेच टाकू का?
Sharif, and I will be walking you through the power of first impression, how you can make a first impression and how it impacts your personal experience with the person you meet for the first time. We know we never get a second chance to make a first impression, right? So let's quickly do a warming up exercise. What is it that what is your first impression about the person that you see on the screen? Is he a doctor? Is he experienced, inexperienced? You can tell by he looks bald, so yes, he's an experienced man. He's wearing a lab coat, so maybe he's a doctor. Can you trust the person? Doctors we usually trust, so yes. What do you think about him? Can you really trust him? What if I tell you he's a thug? It is the same man, just dressed differently, and the impression you had about him was he was a doctor, and you really wanted to trust him. You wanted to believe in him. Some quick statistics on first impression. During the face-to-face meeting, 93% of people's judgments of others are based on the non-verbal inputs like your body language. Your first impressions are formed within the first 7 to 17 seconds of meeting someone. In a survey of 2,000 managers, 33% claimed to know whether or not they would hire someone within the first 90 seconds. That's barely a minute and a half. In a study, researchers identified 5,000 distinct hand gestures in humans, and 38% of the person's first impression is determined by the tone of his voice or her voice. How are the first impressions formed? As you can see in the pie chart in front of you, 55% the way you dress, act, and walk through the door impacts your first impression, 55%. The quality of your voice, the grammar, and your confidence impacts 38%. And 7% is the words you choose to use. Types of body language and what they mean. Positive, open body language. The female that you see on the screen, we can see that she's displaying positive and open body language, whereas the male that you see on the screen is displaying negative or closed body language. You can see he's squinting, his head is lowered, he's blinking too much, his arms are crossed, he's shaking, if you're moving your leg too often. All these are signs or ways to express your body, to express that you are having a negative or a closed body language. In comparison, the female on the left, she's got arched eyebrows, that shows attentiveness, direct eye contact, arms are akimbo, they are fixed, mirroring, feet facing directly towards the person, not facing away from the person, unlike the man in the picture. Some common non-verbal mistakes made during an interview. 26% of the people who interact with other people during the first meeting, the handshake is poor. And if you have a poor handshake, you really cannot have a good impression on the person you're meeting. 21% of the people close their arms over the chest. 33% of people fidget too much. They move their hands too much. They set their hair. They keep moving here and there. They fidget too much. 21% of the people play with their hair or touch their face. 67% fail to make eye contact. We must have seen a lot of times when we go to somebody who's elder to us or who's an authority, we try not to have an eye contact. That shows that we are lacking the confidence to face them. 38% don't smile. 33% have a bad posture. And 9% use too many hand gestures. Now let's quickly look at some of the attires that we can use. Casuals, snappy casuals, business casuals, business-like, semi-formals, and formals. I'll give you a glimpse of what casual looks like. These are casual attires, which we normally wear after 5, I would call them. The snappy casuals. Business casuals. So here you're mixing casual and business both together. So neither are you in a proper formal attire, neither are you in a complete casual attire. So business casuals. Business professionals. Semi-formals. He's wearing a blazer over a t-shirt and a trouser or a jeans. Formals. Some do's and don'ts
for a new job, ensure that you're keep an we feel interviewers to ask you questions. Be all. Don't be. Put down your former employer. Don't down your former employer whenever you a particular job and go to a new job. Ensure that you don't speak bad about the previous employer. What experience you had, that's yourself. Do not get in office. Do not be step and walk over and demanding. And tips to give a before eye to whenever you're that the impression of your hand speak with your to match the other person. If you have any questions, you can write on the comments below and ask me your questions, and I will be happy to answer them. Thank you so much. नेक्स्ट पे नहीं कर सकता नेक्स्ट नहीं कर सकता नेक्स्ट पे नहीं कर सकता हाँ हे
Next. कानात अडकतो हा इथे हे इथे. Objective of this SASM are increase demand for early diagnosis and treatment in patient, combat stigma and discrimination, improve support by community for case referral and case holding, increase capacity of health workers to deliver ACSM messages, and mobilizing political commitment and resources for TB. So the SSM planning is for all state level in at national level as well as state level and district level. At state level, STO state TB officer with support for state IEC SSM officer the state annual action plan, and DTO district TB officer is
everything there. You have to read that. ठीक है? आपका नाम नहीं डालते इधर? डालूं? हाँ, of course. उससे आगे पीछे करेंगे मैडम हाँ. आगे पीछे नाम बोलो. हीना. डॉक्टर. अच्छा. मेहनत की सबसे ज़्यादा पेड़ में मैडम इतना है मालूम है हमको नहीं दी है ना, इसलिए हमको याद नहीं रहा. अच्छा हाँ 3 दिन तक ये पेड़ ही बांट रही छुट्टी पे थी. जाना मेरा भी है ना मेरा हाँ डिपार्टमेंट हमारे बीबी हम घुसपैठ ही कर रहे हैं. असिस्ट 10 प्रोफेसर एफएफपी हाँ बराबर है. ये यू वांटेड अनदर फॉन्ट साइज या कुछ. हाँ यहाँ देखो बराबर सेंटर में है. अब स्टार्ट. हाँ देख लो स्लाइड शो पूरा करके थोड़ा आगे. इसको बड़ा करना है ना. देखो दिख रहा है. ओके यस. नेक्स्ट देखो. Ladies and gentlemen, a very good afternoon to one and all. Yes. Dr. Hina Sayyed. Dr. Hina Sayyed. Hello. Sir, आवाज येत नाही. Good evening to one and all. I, Dr. Hina Sayyed, Assistant Professor from Department of BBA, Poona College of Arts, Science and Commerce, welcome you all. Today's my PPT is on Introduction to Human Resource Management. Introduction to Human Resource Management
Importance of human resource management and functions of human resource management are the content of my today's PPT. Introduction to Human Resource Management. HRM is concerned with the human being in an organization. The management of man is a very important and challenging job because of the dynamic nature of people. No two people are similar in their mental ability, sentiments, and behavior. They differ widely also as a group and are subject to many varied influences. People are responsive, they feel, think, and act. Therefore, they cannot be operated like a machine or shifted and altered like templates in a room layout. They therefore need a handling by management personnel. Importance of human resource management. HRM helps the organization to attain its objective effectively and efficiently by providing competent and motivated employees, to utilize the available human resource effectively, to develop and increase to the fullest of the employee's job satisfaction and job self-actualization, to develop and maintain the quality of work life, which makes the employment in the organization a desirable personal and social situation, to help maintain ethical policies and behavior inside and outside the organization, to help and maintain cordial relations between employees and management. Functions of human resource management are human resource planning, designing of the organization's job, selection and staffing, training and development, organizational development, compensates employees, assistance, union or labor relation, personal research and information system. Function of management, at a glance you can say it's a managerial functions of HRM and operative functions of HRM. Managerial functions of HRM are planning, organizing, directing, controlling. Operative functions of human resource are procurement, development of HRM, motivation and compensation, maintaining the functions of HRM. Here in detail we can see in our next PPT. For this, I will stop here. Thank you. ते ऍडव्हान्स सेटिंग आहे म्हणजे स्क्रीन टोन जो आहे एकदम प्रोफेशनल लेवल पीपीटी बोल के ये वाला नीचे 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 वाला
ओके सर। नमस्ते, मैं डॉक्टर बाबा शेख, हिंदी विभाग, असिस्टेंट प्रोफेसर, पूना कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, कैंप पुणे। छात्रों हो, आज का जो हमारा विषय है प्रेमचंद की जो आत्मकथा है मेरा जीवन। तो इस आत्मकथा में सर्वप्रथम हम देखते हैं कि आत्मकथा किसे कहेंगे। अनेक विद्वानों ने आत्मकथा के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं की है। तो अंग्रेजी में इसके लिए ऑटोबायोग्राफी शब्द का प्रयोग अक्सर किया जाता है। तो आप आत्मकथा की परिभाषा में हम साहित्य की अन्य विधाओं की तरह ही आत्मकथा भी एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसमें रचनाकार आत्मावलोकन करते हुए स्वयं अपने जीवन का मूल्यांकन करता है। अतः सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि जीवन का स्वयं किया गया विवेचन आत्मकथा एक लेखक विश्लेषण है जो भोगा हुआ यथार्थ है। हरिवंश राय बच्चन के अनुसार उन्होंने आत्मकथा लेखन की वह विधा के बारे में कहा है जिसमें लेखक ईमानदारी के साथ आत्मपरीक्षण करता हुआ अपने देश काल परिवेश से सामंजस्य अथवा संघर्ष के द्वारा अपने को विकसित एवं प्रस्तापित करता है। गोविंद त्रिगुणायत के ने अपने आत्मकथा के बारे में इस तरह परिभाषा की है। आत्मकथा लेखक की दुर्बलताओं, सबलताओं आदि का वह संतुलित और व्यवस्थित चित्रण है जो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के निष्पक्ष उद्घाटन में समर्थ होता है। मेरा जीवन ए प्रेमचंद ने जो खुद का स्वयं भोगा हुआ जो यथार्थ है उनको यहाँ पे प्रस्तुत करने का यहाँ पे प्रयास किया है। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और प्रेमचंद को उपनाम से नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद से भी जाना जाता था। उपन्यास के क्षेत्र में उनका कार्य देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यास सम्राट शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि उनको दी है। उन्होंने आरंभ में उर्दू और फारसी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और जीवन यापन करने के लिए उन्होंने हिंदी अध्ययन और अध्यापन किया और उसका ही शौक उन्हें बचपन से शुरू हुआ। जीवन संबंधी अनुभूति की वाणी लेखक ने स्वयं अपनी साहित्यिक, सामाजिक एवं पारिवारिक परिस्थिति का लेखा-जोखा जनमानस के सम्मुख रखने का प्रयास किया है। आत्मकथा के माध्यम से मध्यवर्गीय कृषक परिवार का उन्होंने चित्रण किया है। जीवन अभाव से परिपूर्ण जीवन आत्मकथा में दिखाई देता है। पिता उनके पोस्ट में क्लर्क थे, हर माह 20 रुपए कमाते थे और पिता के असामयिक मृत्यु के कारण घर की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। विमाता की दो संतान, उनका भी लालन पालन करना प्रेमचंद जी की जिम्मेदारी बन गई। प्रेमचंद का विवाह 15 वर्ष की आयु में हो गया। गांव से शहर 12 मील दूर पैदल चलना, जीवन अभाव से परिपूर्ण भरा उनका जीवन था। अनेक समस्याएं सामने खड़ी हुई थी। इसलिए प्रेमचंद जी अपने पारिवारिक एवं निजी जीवन की परिस्थिति के बारे में कहते हैं, मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो है, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियां और खंडहरों का स्थान नहीं है। उपरोक्त वाक्य से पता चलता है कि उनके जीवन में उत्पन्न सुख, पीड़ा, निराशा का प्रतीक है। लेखक का कहना है उनका जीवन सपाट समतल नहीं तो उनका जीवन की राह में उत्पन्न टीलों, गड्ढों से भरा पड़ा है। उन्हें अपने जीवन में अनेक अड़चनों का सामना करना पड़ा। उनके जीवन में सुख, समाधान, धन, पैसा, आराम आदि बातों का कोई स्थान नहीं था। पढ़ाई करना उनके नसीब में नहीं था। अपनी महत्वाकांक्षा को भी पूरा ना कर पाए। मन की इच्छा थी, आगे बढ़ने की ख्वाहिश थी, लेकिन वह बातें हमें खूबसूरत महसूस हुई। प्रेमचंद की शिक्षा संबंधी अनुभव हैं। प्रेमचंद जी मैट्रिक 2nd डिवीजन में पास हुए। अच्छे क्वींस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। इसी निराशा से बेचैन प्रिंसिपल मिस्टर रिचर्डसन उनके घर पहुंचे, मगर कॉलेज में मिलने के लिए कहा।
ठाकुर इंद्र नारायण सिंह हिंदू कॉलेज की समिति पर थे। उनकी सिफारिशों के कारण एडमिशन का पत्र उन्हें मिला था, मगर किस्मत के मारे घर जाते ही तेज बुखार। 15 दिन घर में आराम किया। नीम की हरी पत्तियां का काढ़ा पी पी कर परेशान। कॉलेज पहुंचने के बाद बुखार से नहीं मानेंगे, इसलिए उन्होंने बड़ी बीमार पल्पिटेशन ऑफ हार्ट की बताया। उस पर प्रिंसिपल ने सभी को योग्यता की जांच की जाए इस तरह लिख दिया। और लेखक अंग्रेजी विषय अच्छा था, लेकिन गणित और रेखा गणित पर उनका भरोसा नहीं था। अंग्रेजी में उन्हें संतोषजनक मार्क मिले, लेकिन गणित और अन्य विषय में और असंतोषजनक लिखा गया। लेखक हरे किस्मत के मारे जहां भी जाते असफल होते, किसी की सहायता नहीं मिली, और जहां सहयोग मिला उन्हें वो रास नहीं आया। इस तरह उनके शिक्षा संबंधी बड़े कटु अनुभव आए। सोजे वतन संबंधी कार्रवाई यानी देश में स्वदेश प्रेम की महिमा गाने वाली प्रेमचंद जी की देशी भक्त हिंदुस्तान पर विदेशी शासन का प्रबंध था। उस समय लेखक प्रेमचंद जी ने कहानियां उपन्यास लिखना आरंभ किया था, तब उन्हें कुछ कठोर अनुभव आए। 1908 में उन्होंने सोजे वतन कहानियां संग्रह उर्दू में छपा। वे नवाबराय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे। उस समय बंग आंदोलन चल रहा था। इसी 5 कहानियों में देश प्रेम की महिमा का वर्णन था। सोजे वतन में राष्ट्रीय भावना से पूर्ण होने के कारण सोजे वतन को जब्त कर लिया गया, लगभग 700 प्रतियां, जबकि नवयुवकों में राष्ट्रीय चेतना निर्माण करने का बहुत बड़ा कार्य प्रेमचंद जी ने किया, लेकिन अंग्रेजों को यह काम खल रहा था। उस समय लेखक शिक्षा विभाग में डिप्टी कलेक्टर थे। सोजे वतन छपकर 6 माह हो चुके थे। जिलाधीश का परवाना लेखक के नाम आया। सोजे वतन लिखकर सरकार का अपमान करना प्रेमचंद के ऊपर आरोप लग गया। कलेक्टर के साथ एक समिति गठित की गई। पहचान की समिति का गठन हो। समिति में ही निष्कर्ष निकला, लेखक केवल कलम से लिखा है, राजनीति से प्रेमचंद का कोई संबंध नहीं है, इसलिए उन्हें फिर से इस तरह की हरकत करने से मना कर दिया और छोड़ दिया और धमकी दी गई। इसी तरह प्रेमचंद जी का जो जीवन है एक कठिन संघर्ष के साथ गुजरा। इसी तरह उनके आत्मकथा में उन्होंने अपने लिखा है। धन्यवाद। तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, it's a mirror. इंटरनल चल रहा है अभी लाइव जाने के लिए। अभी इनका एक रिकॉर्डिंग कर लेगा। एक रिकॉर्डिंग पहले रिकॉर्डिंग वोट ऑफ सैंक का रिकॉर्डिंग कर लो। ओके ठीक। सर थोड़ा सा थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, है ना? थोड़ा स्पाइक दिया था सर के पास पेन है। से बोल देते हैं।
सर्टिफिकेट तो वहीं देंगे ना। कहाँ पे सर इसमें? VOT। ये वोट ऑफ थैंक्स रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन अभी वोट ऑफ थैंक्स दे नहीं रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में आपके हवाले कर दिया जाएगा। Is it all right? सर थोड़ी सी स्क्रीन टेढ़ी हो रही है और ऊपर जा रही है। स्क्रीन टेढ़ी लग रही है। थोड़ा सा थोड़ा मैं इस तरफ हाँ नहीं स्क्रीन टेढ़ी थोड़ा ऊपर करो सर, ऊपर ये ऊपर से ऊपर, हाँ थोड़ा सा ऊपर। ठीक है सर चलिए। विश में लक। It's too hot. HAMMAD. HAMMAD. ZUBER. That's it. Yes, sir. I begin in the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Eminent resource persons of the FDP, Shri Bhushan Kulkarni and Shri Eknath Kore.
respected Principal Dr. Aftab Anwar Sheikh, Vice Principal Professor Moinuddin Khan, and Professor Iqbal Sheikh, Vice Chairman Library Advisory Committee Professor Irfan Sheikh, all the participants from Pune city, from all over Maharashtra, and from all over India who have participated in online mode, members of college teaching staff, and dear friends. A very good evening to all of you. It is indeed my privilege to propose a vote of thanks. At the very outset, we all must be thankful to our Supreme Creator for kindling the noble intention of organizing, attending this FDP in our hearts. We take this opportunity to thank our college management, Yatim Khana and Madrasa Anjuman Khairul Islam, Mumbai, for very graciously sponsoring this FDP. We express our deep sense of gratitude to our resource persons, Shri Bhushan Kulkarni, Shri Eknath Kore, and their team, including Mr. Vikas Ingle, who have given such sparkling presentations. I am falling short of words to express my emotions. In a nutshell, as per my personal assessment, they have created history. We are highly in debt to our principal, Dr. Aftab Anwar Sheikh, Vice Principal and IQSC Coordinator, Professor Iqbal Sheikh, Vice Principal, Professor Moinuddin Khan, Vice Chairman of the Library Advisory Committee, Professor Irfan Sheikh, for their support and guidance, without which this event would not have been possible. We express our gratefulness to all the members of the Library Advisory Committee and the subcommittees who gave us support for organizing this event. Thank you, dear colleagues. I thank all my department colleagues of library for their rock-like support and assistance. Thanks are also due to all the participants from our Pune city and from all over India, including our very own senior colleges teaching staff, for actively participating in this FDP. We hope that the same tempo of e-content development continues and expands widely. Thanks are also due to all those who have contributed in the conduct of this FDP, but whom I may have missed out. Thanks to one and all. लैपटॉप को उस लैपटॉप को हाँ इधर दो दो वीडियो जो रहे ना कल मैं कर दूँ आजा आजा सेटअप हटा रहे हैं आजा जल्दी आजा अरे उठना खड़े हो डायरेक्ट पढ़ेंगे नहीं ना कुछ हिंदी वाले देखो अगर हो गए होंगे आ रहे होंगे तो ठीक है नहीं तो कर रहे हैं ना उधर बैठो हाँ ना उधर सेटअप लगाओ सर्टिफिकेट देना है इस पर इस पे लिखेंगे आप हाँ सर सर एक्सप्लेन करने का सिर्फ क्या एक्सप्लेन करेंगे सिर्फ एक्सप्लेन करने का सर 6 स्लाइड है मेरी अच्छा और वो स्लाइड में कुछ कुछ ऐसा सिंबल जैसे फोटो है उसको एक्सप्लेन करना है मेरे सर लेकिन क्या 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 एक्सप्लेन कर देख सकते हैं
कहाँ पे पीपीटी एल्गोरिथम्स इस पर डायरेक्ट क्लिक होता है मोबाइल का कैमरा हाँ सर। तो हाय एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं डीएसए के बारे में कि ये एक्चुअल में क्या होता है। डीएसए का फुल फॉर्म होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ये वो पार्ट है जो हमें लाइफ में हमारे बहुत काम आता है और इससे हमारे बहुत सारे काम जो इजी हो जाते हैं। जैसे कि एक लाइब्रेरी होती है, उसमें से हमें बुक निकालनी होती है कि इस बुक हमें इधर से निकालना है, तो हमें वो हमें फाइंड करनी नहीं होती है। हम उसका नाम देख के, उसका रॉ देख के उसको उधर से निकाल लेते हैं। तो ये लैंग्वेज ऐसी होती है जिसे हम वहाँ से हम वो चीज़ को निकाल सकते हैं। तो हर चीज़ में हमें एल्गोरिदम की नीड होती है। तो वो एल्गोरिदम को हमें पढ़ने के लिए 3 लैंग्वेजेस होती है। जैसे इसमें फर्स्ट लैंग्वेज है जावा, पाइथन और C++। तो जावा जो होती है वो ये हमें एपीआई के लिए हेल्प होती है, और पाइथन हमें होती है मशीन लर्निंग एआई के लिए, और C++ जो होती है वो गेम के लिए होती है।
गेम के लिए होती है। और डीएसए इन सब से हर लैंग्वेज से डीएसए कर सकते हैं, जैसे जावा से भी कर सकते हैं, पाइथन और सी प्लस प्लस से भी हम कर सकते हैं उसे। और उसके बाद जो हमें इसमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसमें है नेटवर्किंग होती है, डीबीएमएस होता है और ओएस होता है, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये लैंग्वेजेस पढ़ के हमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन पे जॉब और प्लेसमेंट मिल सकती है। और इसके बाद इस कोर्स को करने के बाद हमें क्या क्या, हाँ, जो हमें जावा पढ़ने के बाद हमें क्या क्या नीड होती है, और ये सब इसमें एक्सप्लेनेशन है कि ये हमारा सबसे अच्छा लैंग्वेज अगर मैं प्रेफर करूँगा तो ये है। और उसके बाद ऐसे एक्चुअल में क्या है जो मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ, और इसमें प्रैक्टिस करने की हमें बहुत नीड होती है। जैसे लीड कोड होता है, एक लीड कोड करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद गाइडेंस भी हमें मिलती है बहुत सारे इसमें से। और उसके बाद जो है कि एल्गोरिदम, जैसे मैं आप बोलो कि कोई भी चीज़ को जो हमें इजी करने के लिए जो एल्गोरिदम की नीड होती है, तो जो एल्गोरिदम के बिना हम मतलब कोई भी काम हम कर नहीं सकते उसे। तो ये एल्गोरिदम के साथ हम हर काम को अप्लाई कर सकते हैं मतलब। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट वो है, अगर हम सपोज़ कीजिए अगर हमें 6 बजे उठना है, हम 6 PM को हम उठते हैं, AM में, सॉरी, तो वो जब वो टाइम होता है तो हम उससे उठ, जब वो अलार्म जब बजता है तो हम उससे उठ जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट होती है कंडीशनल स्टेटमेंट, या तो अलार्म को हम ऑफ कर सकते हैं या तो हम उठ सकते हैं, ये दो चीज़ें इसमें आती है। और सेम यही है, क्या आज हमें मॉल जाना है या कहीं और जाना है, तो हम दो चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, या हमें इधर जाना है या हमें इधर जाना है। इसके बाद हिप्स क्या होता है? हिप्स आप एक वो देख सकते हैं कि एक पहाड़ हो सकता है ऐसा, अलग अलग होती है। 70% वाले लोग की अलग होती है, और जो 80% वाले लोग की अलग होती है। तो वो हमारा एप्लीकेशन जो है वो फाइंड कर देता है, और उन्हें जो है उन्हें एडमिशन और सीट देता है। सीट हमारी, जैसे हमारे वॉक में जो है 50 सीटें अवेलेबल होती है। अगर 100 बच्चे का एडमिशन होता है हमारे इसमें, तो उसमें से हम जो टॉप 50 है उन लोगों को ही हम एडमिशन लेंगे, ये मतलब ये साल में। तो ये भी चीज़ होती है। और ये जो क्वीन करके है, इससे हम सिंपली लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एक लाइन बोल सकते हैं हम, जैसे कोई भी चीज़ की एक लाइन होती है, एक लाइन के तौर पे हम इसे बोल सकते हैं। स्टैक क्या होता है? स्टैक, हम कोई भी डेटा को एक के ऊपर हम स्टैक कर सकते हैं से स्टैक के फॉर्म में। तो ऐसे बहुत सारे डेटा होते हैं जो हमें सॉर्ट करने पड़ते हैं। से मैं इससे पहले आपको एग्जांपल दिया हूँ कि 60% वाले लोग जो अलग होते हैं, 70% वाले अलग होते हैं, 80% वाले लोग अलग होते हैं। तो ये स्टैक के फॉर्म में जो हमें मिलता है डेटा, उसको स्टैक के फॉर्म में अगर हमें डेटा मिलता है तो उसे स्टैक बोलते हैं हम। हाँ सर, थैंक यू। We are in the terminal session of this faculty development program. हम अंतिम चरण में हैं। मैं निमंत्रण देता हूं अपने वाइस प्रिंसिपल को
कि वो स्टेज पर आ जाएं। वॉल्यूम बढ़ाते क्या? आप लोग सब किस हाल में हैं इसका सबको इल्म है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आगे की कार्रवाई को अंजाम देता हूं और सर्टिफिकेट वितरण समारंभ अभी शुरू करते हैं। जो आउटसाइडर्स हैं उनको सर्टिफिकेट हम दे देंगे, उनका नाम हम बुलाएंगे। आप लोग ज़रूर सामने आइए और हमारे वाइस प्रिंसिपल से गुजारिश करता हूं कि उनके हाथ में ये सर्टिफिकेट हवाले कर दें। संतोष नथुलिंग जंगम सर, इन्होंने काफी स्टार्टिंग में सबसे एंथुसियाज्म से पार्ट लिया। गर्गी वजे, श्री सुहास अंकुश पाटिल, श्री तुषार पंडितराव देवरे, आप बड़ी दूर से सफर करके आए हैं, हुलिया से है ना सर? डॉक्टर भरत करदक, सर या ना सर, सर या। नयना छोटू लाला बोरसे, मिस्टर पंकज शिंगोटे, श्रिया दातार, स्वाति वजे, और गौरी पेडनेकर। सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन अब खत्म हुआ। अभी हम गुजारिश करेंगे हमारे वाइस प्रिंसिपल से कि वो कुछ वैलिडिटरी एड्रेस करें। बैठ के करो, ऐसा नहीं। भाई देखिए, मुशर्रफ हुसैन सर ने पहले ही आपकी तरफ से बता दिया है
कि आप लोगों की तबीयत कितनी बेचैन है, और आज ही नहीं बल्कि कल से आप लोग ये बैठे झेल रहे हैं, और इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। ये एक ऐसा मीडिया है, एक ऐसा सोर्स है जिसने पूरी दुनिया को न सिर्फ ये कि एक कर दिया है, बल्कि सबको एक दूसरे के सामने खोल दिया है। अब दुनिया में कोई चीज़ न तो छुपी हुई है और न ही कोई चीज़ बंद है, और ये शिकायत नहीं कर सकते कि हम बहुत दूर हैं, हम किसी से बात नहीं कर सकते। दुनिया के हर कोने, हर कॉर्नर से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, मैं हमेशा उनको याद करता हूँ कि वो इसी मीडिया से अपने देशवासियों से अपने मन की बात करते हैं, और जो कुछ उनके दिल में होता है वो अपने लोगों तक उसको पहुंचाते हैं, पहुंचते भी हैं और पहुंचाते भी हैं। और यहाँ तक कि इसी मीडिया ने पूरी दुनिया, बल्कि हमारे देश के साइंटिस्ट लोगों ने इसी ज़रिए से चंदा मामा से भी आपकी मुलाकात करा दी है। आपने सारा सीन उसका इसी से देखा है, और इसरो से बैठकर हमारी टीम ने इसी से उसको कंट्रोल किया है। और सबसे असल बात यह है कि दुनिया में जो भी नॉलेज है, जो भी इल्म है, उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए जो असल सोर्स हर ज़माने में रहा है वो आप हैं। आप हैं, आप। ये सोर्स आपने ही बनाया है। तो असल सोर्स आप यानी टीचर्स हैं, और टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स के लिए हर लिहाज से मॉडल बनना चाहिए। और इसके ज़रिए हम कितना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं ये न तो ज़ुबैर साहब बता सकते हैं और न ही कुलकर्णी सर बता सकते हैं, बल्कि ये अपने ऊपर है कि हम कितना इससे फ़ायदा हासिल करें। मैं एक नाथ कोरे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, भूषण कुलकर्णी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इंग्लिश साहब और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोरे साहब जब आए थे 15 दिन पहले, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आपने पहचाना क्या? मैंने कहा आप वही हैं जो 2019 में जिस चीज़ का मज़ा चखा कर गए हैं। तो कहने लगे सही पहचाना सर आपने। तो बोले मैं अभी उसका पूरा सिस्टम और स्टूडियो और उसकी पूरी टेक्निक सिखाने के लिए आया हूँ, और उसका पूरा एडवांस सिस्टम जो हो सकता है वो देखिए। वो आए 3 दिन यहाँ रहे, और जाहिर सी बात है कि हम उनकी कोशिश और उनकी मेहनत का न तो हम कुछ हदिया दे सकते हैं, और न ही कुछ जो है उनके बारे में कुछ हम ज़्यादा इजहार कर सकते हैं। उनका हदिया, उनका गिफ्ट और उनकी मेहनत का नतीजा और फल आपके हाथों में है। आप जितना इस मॉडर्न सिस्टम से फ़ायदा उठाएंगे, उनको इससे खुशी हासिल होगी और उनकी मेहनत भी वसूल होगी। तो मैं इन तमाम लोगों का, और मुशर्रफ सर का और ज़ुबैर सर का, और सबसे ज़्यादा हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर आफ्ताब अनवर शेख साहब, जो हर वक्त हम लोगों को कुछ न कुछ सिखाकर चंद्रयान के ज़रिए चांद तक पहुंचाना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमने उनसे दरख्वास्त और रिक्वेस्ट किया है कि सर इस तरह काम नहीं चलेगा, बल्कि एक स्टूडियो हमारे कॉलेज में कायम किया जाए और हमको मौका दिया जाए, हमारे टीचर्स को, हमारे साथियों को, कि ये चीज़ जो है वो कंटिन्यू रहे। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह प्रिंसिपल साहब बहुत जल्द आपको एक स्टूडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन उनको फिर यही शिकायत होगी कि हमारा कोई टीचर उससे फ़ायदा नहीं उठा रहा। तो मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और एक बार फिर सबका
अपनी इस टीम का भी और आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रिंसिपल का भी, और जिन्होंने जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो एनर्जी का ज़रिया बनती हमारी मैनेजमेंट अंजुमन खैरुल इस्लाम, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ज़ुबैर साहब इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अल्लाह ताला हमें और हमारे और आपके इल्म में इजाफ़ा और बरकत दे, और हम और आप सब इसी ज़रिए से यहाँ बैठकर नहीं बल्कि वीडियो के ज़रिए हमारी आपसे एक दूसरे से मुलाकात और बात होती रहे। मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और मैं ये जो कुछ कह रहा हूँ वो प्रिंसिपल साहब की तरफ से कह रहा हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। और इसी के साथ ही इस प्रोग्राम का कंक्लूजन होता है। आप लोग अपने सामान उठाइए, देखिए कि आपके ही हैं वो, और बखैर घर पहुंच जाइए। थैंक यू वेरी मच, एंड सर्टिफिकेट्स फॉर द स्टाफ विल बी गिवन tomorrow or day after.